रिवाइज कर लिया करिए। ओके, नाउ वी आर कवरिंग वर्स नंबर 25. लिसन माई प्रोनाउंसिएशन क्लियरली, बिकॉज मैं आप लोगों से प्रोनाउंस करा सकता हूं। दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम च कर्ण युग्मयोः कपाल रंध्रम पंचेते दंत धौति विधीयते. in Sanskrit translation, दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम च कर्ण युग्मयोः कपाल रंध्रम पंचेते दंत धौति विधीयते. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन अवर वर्स नंबर 25, दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम च कर्ण युग्मयोः. So total 4 you are seeing here, but there are 5 kinds of dant dhoti. How? First one is dant, second one is jibha, third one is kapal randra. Okay, sorry, कर्ण रंध्र, sorry, कर्ण रंध्र. कान दो हैं तो वाम और वो जो दोनों कानों हैं उनको अलग अलग. No, randra means kapal randra. I was right. Randra means kapal randra. Karna means two. कर्णरंध्र सर. 1, कर्णरंध्र फिर कपाल रंध्र. 2, 3 plus 2, 5. Okay, so how it is 5? Anyone have doubt? You can ask me now, but in exam hall there will no person who will answer you how it is 5. So total there are 5 kinds of dant dhoti: dant mool, jibba mool, cleaning of tongue, karn randra means ears, kapal randra means cleansing the upper region of the head, which is also the crown region, you can say. There are 5 in all. Okay, how it is 5? You know the real answer how it is 5. You have 2 years, guys, but don't say that, sir, we have 32 teeth also. So why it is not more than 40? Okay, don't say that we have 32 teeth. The literal meaning of dant dhoti is cleaning the teeth, but it means cleaning, the purifying the region of the head. The first practice is dantmool, cleansing the teeth and gums. The second practice is jibba moolam, cleansing the tongue and its root. Tongue and its root, okay? Jibba and moolam. Jibba means jibba, tongue, and moolam means the root of your tongue. It's called root. Randram. Randram cha. Karna yugmayo means cleansing with your 2-ear orifices. Orifices means randra, karna randra, orifices. Left and right ears are cleaned separately, so it is considered to be 2 dhotis. Kapal randra means cleansing the upper portion of the frontal part of the head. There are 5 types of dant dhoti here. So what is dant mool dhoti here? Verse number 26 and 7 says, हादिरेण रसेनाथ शुद्ध मृतिकया तथा मार्जयेत दंतमूलम. मार्जयेत, मार्जयेत मीन्स मांजना, बर्तन मांजते हो ना. इन हिंदी वी से बर्तन मांजना, डोंट वी से बर्तन धोना, वी से बर्तन मांज दिया कि नहीं धोया, मांज दे भाई बर्तन. मांजना मीन्स साफ करना. मार्जयेत दंतमूलम चा यावत, यावत मतलब तब तक, यावत मतलब तब तक, मतलब टिल in English. Kilvisham aharet. Kilvish means, who was the Kilvish in Shaktiman? Anyone who watched Shaktiman in our childhood? Kilvish के आदमी हैं. दंत मूलम पराधौति योगिनाम योग साधने नित्यम कुर्यात. How many times? नित्यम कुर्यात प्रभाते च दंत रक्षात योगवित दंत मूले धावनात् आदि कार्येषु योगिनाम मतम. इन संस्कृत ट्रांसलिटरेशन, आपको मैं संस्कृत पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ पा रहे हो कि क्या कहना चाह रहे हैं ये. ठीक है,
खादिरेण रसेनाथ शुद्ध मृतिकया तथा मार्जये दंतमूलम च यावत् किल्बिषम आहरेत दंतमूलम पराधौतिर योगिनाम योग साधने नित्यम कुर्यात् प्रभाते च दंतरक्षात् च योगविद दंतमूलम धावनाधिकार्येषु योगिनाम मतम, योगियों का मत है. सो हियर द मीनिंग ऑफ दिस वर्स: rub or massage the roots of the teeth with the juice of the khadir plant. What is khadir? Katha. It's also called Tuna. no, not chuna yaar. If you will use chuna, आप अपना जबान काट लेंगे. केचू पाउडर. It's also known as kechu powder. As it is here, I have already highlighted this kechu powder. Okay, kechu plant. Acacia kechu is used. So it is technique. For your knowledge, what is khadir? It is also called kechu powder. This is none other than katha. If you have experience of eating pan, you know what is katha, what is kechu. Okay, khadir and rasenath. Rub or massage the roots of the teeth with the juice of the khadir plant or with clean earth until the impurities are removed. So you can choose both. First one is khadirin, second one mitti also called mud. What kind of mud you can use? First, you have to remove the all impurities which is under the mud. After that, you can use mud. Otherwise, you can't use mud. Okay. First one was khadirin. What is khadir? Kechu powder. Second one, mud, mitti. Okay. Yogi must adopt this method every morning. What is every morning? Nityam kuryat prabhate cha. Yogi have to adopt this method every morning to protect their teeth. Those who know yoga consider dantamul dhoti to be significant part of the purification process. योगियों का मत है. So this is a very significant part of our purification process. Okay. It would be very helpful. Okay, Namita ji, it will be very helpful. So it is, I think it's clear now how you will clean your teeth. I'm gonna go ahead. Verse number 28. Athata, now. Athata means now. As you can hear me, now I'm gonna go ahead. That's the all meaning of athata. ऐसे ही घिरण जी is telling to Raja Chandakapali. Okay, now I'm gonna go ahead. Sampravachyami, I'm gonna tell you about Jivha Sodhan Karanam. How can you clean your tongue? How? I'm gonna tell you the technique of cleansing the tongue. Jaraman, Rogadi, Nashayet, and Dirghalambika. These techniques, which technique? Tongue cleansing technique, lengthening of the tongue, destroy old age, death and disease. जरा मरण रोग आदि नाश ये. ठीक है. So can you elaborate why it is possible if we give length to our tongue, how it is possible, how we will destroy old age, how can we stop our death, and how will we conquer our disease? How? Anyone who have this answer? Kechari mudra. It is Kechari Mudra we can This do. is none other than, it is a kind of Khechari mudra. Okay, you can correlate it with Khechari mudra because you can insert your tongue up to the somras ka straw. It is also called somras straw. Okay, जो निरंतर बह रहा होता है हमारे चंद्र स्थान.
it is also called in English Chandrasthan, solar plexus, and second one was चंद्रस्थान को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? I don't know, but you should know that what is Chandrasthan. सोमरस का स्त्राव, चंद्रस्थान. Anyone? Don't know? Okay. चंद्रस्थान आप समझ रहे हैं ना? आज्ञा चक्र के पीछे होता है, just behind the आज्ञा चक्र. There is the place which is called Chandrasthan. Okay? And in your stomach, this is called Suryasthan. Chandrasthan, Suryasthan. In our विपरीत करणी मुद्रा, हम उल्टा कर देते हैं प्रोसेस. So that's why हम लोग जीत लेते हैं ओल्ड एज, डेथ एंड डिजीज डिसऑर्डर. ओके, नाउ वर्स नंबर 29 and 31. What's 29 and 31 says? How will you clean your tongue? Okay. Tarjani madhyama anama. Tarjani madhyama anama. How many fingers are here? 3. Index finger, middle finger, and Middle ring finger. finger and ring finger. Ring finger. Okay, there are 3 fingers are here. Angulitraya yogata. Angulitraya yogata. Yogata means with the combined 3 fingers. Tarjani, Madhyama and Anama. These 3 fingers. Veshayet gal madhye. Veshayet gal madhye. Gal means your throat. Throat. Up to your throat. मार्जयेत लंबिका मूलम. आपकी लंबिका की मूल कहां तक गई है? योर गल मध्य मीन्स योर अप टू द थ्रोट. सनई सनई, slowly slowly. Yogi, slowly slowly. Don't rub very fast. Slowly slowly. Ma jitwa, and that will remove your kaph dos. Okay, kaph dosam nivaryet. There are 3 types of dosas mentioned in Ayurveda, and first one is Vat, Pitta, and Vata, Kapha. Pitta and Kapha. 3 dosas. So if UGC will ask which dosas will be removed by tongue cleaning, so you have answer here. Kapha Kapha. dosa will be removed. It is very important. How many fingers? 3 fingers. Tell me the name. Tarjani Madhyama Anama. This is very important for your exam purpose. Okay? Let's move ahead. After that, Marjyet Navaniten Dohayet Punah Punah. First one, you have to Veshayet Galamadhe, insert up to your throat. Marjyet means rub your tongue up to your root of your tongue. Then Marjyet Navaniten. What is Navanit? Navanit means Navanit is nothing than your butter. Okay. Dohayet, Dohna. Dohna. What is Dohna called? Dohna called Repeating action like rubbing is dohna. Okay, rubbing. तद अग्रम लोह यंत्रेण मतलब चिमटी, लोह यंत्रेण कर्षयित्वा शनै शनै, slowly नित्यम कुर्यात् प्रयत्नेन रवे उदय अस्तके. रवे मतलब सूर्य, सन. उदय एंड अस्तक. उदय सर मीन्स स्क्रीन शेयर किया सर. ओ यार, आई हैवंट. सर आज आप भूल गए, मैं भी याद दिलाने वाली थी. तो आप लोग बुक से पढ़ रहे हैं? जी सर, बुक है जी ना, सर. पढ़ते हैं. अरे यार संदीप जी, यार इतना देर से कैसे बता सकते हो आप? we are having book, we are seeing that, just we have noticed sir. Why guys, why? थोड़ा सा और पहले याद दिला देते यार. Those who are watching on YouTube, what will they see on screen? They will see my face only. Sorry, आप लोग बुक से पढ़ना. अब तक मैं बुक खुद ही खोल ले रहा हूँ.
देखो आप लोग पहले क्यों नहीं पता, इतनी अच्छी चीजें आप लोग पढ़ना सिखा रहा था मैं। हट। तर्जनी मध्यमा नाम अंगुलित्रयोगत वेशयेत गल मध्ये तुमार्जयेत लंबिका मूलम शनै शनै मार्जित्वा कवदोषम निवारयेत मार्जयेत नवनीतेन। आफ्टर दैट मार्जयेत नवनीतेन, मार्जयेत विद butter, दोह्येच पुनः पुनः, rub your tongue again and again, then तद अग्रम लोह यंत्रेण कर्षयित्वा शनै शनै, खींचना होता है, कर्ष मतलब खींचना, पुलिंग। नित्यम कुर्यात प्रयत्नेन रवे उदय अस्तके, रवे मीन्स होता है सन, सनसेट एंड फर्स्ट वन इज उदय एंड सेकंड वन इज अस्त। उदय इज कॉल्ड सनराइजिंग एंड सनसेट। सनराइजिंग एंड सनसेट, 2 टाइम्स, ठीक है। एवं कृते च नित्यम सा लंबिका दीर्घताम व्रजेत, और प्रतिदिन करने से लंबी होती है। आप लोगों ने संस्कृत देख ली है, मैं एक बार इसमें से पढ़ दे रहा हूं। तर्जनी मध्यमा अनामा, देयर आर 3 ना, तर्जनी मध्यमा एंड अनामा, 3 फिंगर्स। अंगुली त्रय योगता, योगता मीन्स यू नो कंबाइन। व्हाट इज योग? व्हाट इज योग? मिलना मतलब तीनों का साथ में होना। जुड़ना, साथ में जुड़ना, मिलना, जुड़ना, जुड़ाना। एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज योग। एवरीवन से मिलना, मिलाना, जुड़ना, जुड़ाना इज योग। यूनियन बेसिकली। टू यूनियन, टू कंबाइन, ये सब चीजें जो है योग है। सो तीनों उंगलियों का योग जो हो रहा है यहाँ पे, इससे हम इसको कर रहे हैं। वे शयेत गल मध्य तु मार्जयेत लंबिका मूलम शनै शनै मार्जित्वा कफ दोषम निवारयेत। देन व्हाट? देन मार्जयेत नवनीतेन, दोहयेत पुनः पुनः, अगेन एंड अगेन, तद अग्रम लोह यंत्रेण। व्हाट इज लोह यंत्रेण? चिमटी, this is another than chimti. Chimti, what is chimti? Chimti, and you all know what is chimti here. Chimti is also called, what is chimti? tongs. With the Tongs, help of small tongs. tongs. Okay, small tongs. This is what we are searching. This is tong, small tongs. Okay, छोटी सी चिमटी से खींचना होता है अपनी जीभ को। ओके, कर्षित्वा मतलब खींचना, पुल योर टंग स्लोली स्लोली। कर्षित्वा शनै शनै नित्यम कुर्यात प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक जो भी करता है इसको, बाय विद एफर्ट। कब कब? रवेरु उदके अस्तके, रवे मीन्स होता है रवे। व्हाट इज रवे? रवे मीन्स सूर्य, सूर्य मीन्स सन। उदय एंड अस्त, उदय मीन्स सनराइज एंड अस्त मीन्स सनसेट, 2 टाइम्स। एवं कृते च नित्यम स लंबिका दीर्घम व्रजेत। इट इज वेरी सिंपल। I think it's already clear with our verse. There is no need to read all the meaning which is mentioned here. We have the meaning. Okay? But let me read for you. The root of the tongue should be cleaned by inserting the index, middle, and ring finger in the throat. In the throat. Up to the throat, middle of the throat. Okay? Madhya, that is so. What is here? The gal madhya. Madhya means middle of your throat. In the throat, nahi, middle of the throat. Cough disorders means phlegm are removed by slowly and gently rubbing the tongue. Again, once this cleaning and rubbing is over, what will you do? Apply a little butter on the tongue. Little butter. ओके, बटर लगा लिया, अब क्या करेगा आदमी? रब करेगा इसके साथ। व्हाट विल यू डू अगेन? नेक्स्ट यू विल डू अगेन परफॉर्म द एक्शन लाइक दैट ऑफ मिल्किंग अ काउ। जैसे आप गाय का दूध निकाल रहे हो, लाइक दैट। देयर आफ्टर आप स्ट्रेच द टंग। व्हाट इज कर्षित्वा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्षित्वा? कर्षित्वा इज स्ट्रेचिंग योर टंग, ओके, विद द हेल्प ऑफ स्मॉल टोंग्स। टोंग्स इज your chimti, you know, chimti, you can make chimti here. This is chimti. And this is clip, but you can imagine in your mind, this is chimti.
The length of your tongue increase by doing this practice daily at the time sunrise and sunset. 2 times you have to do. Time is very important for exam. I'm gonna go ahead, guys. Verse number 32. What 32 says? 32 says, Tarjanya Anamika Yogat. Not read Yogan. This is Yogat. Okay? If you will read Yogat in your mind, I know this is written Yogan Marjit Karnrandriyo, but break the words. You will get your definition here. Tarjanya, what is Tarjan? Your index finger. Anamika, what is Anamika? Your ring finger. Yogan Marjagit Karnrandrayo. Marjagit means why? Marjit, Manjana. Karnrandrayo. Nityam Abhyas Yogene Nadantaram Prakashit. This is very important for your exam purpose. If you are someone who want to listen Nad by doing Satkarma, which Satkarma you will do? कर्णरंध्र धोती Karnarandra Dhoti. Okay? Karnarandra Dhoti. What is this? Is Dhoti. This is Vasti. This is Neti Nai. This is Dhoti. Okay? Which is mentioned in Karnarandra Dhoti. If you perform Karnarandra Dhoti, if you will adopt this technique, you will hear Nad. Nadantar. It is also mentioned in Hat Pradipika, Nadanusandhan. Okay? तर्जन्य अनामिका योगान मार्जयेत कर्ण रंध्रयो, दोनों कान के जो आपके ऑरिफिसेस हैं उनको मांझना, ऐसे ऐसे करके राउंड 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 ऐसे करके दिखा देता हूँ. चलो, दिस इज तर्जन्य मीन्स योर इंडेक्स फिंगर. अगेन सेकेंड वन, दिस इज योर अनामिका. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इन सॉरी रिंग फिंगर. शादी के टाइम पे इसी उंगली का इस्तेमाल होता है ना. ऐसे 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 करके गोल गोल घुमाना होता है, राउंड एंड राउंड. Practicing this daily, Nad or inner sound may be heard. You can hear Anahat Dhoni also by performing this technique. What is Anahat Nad and what is Ahat Nad? Anahat is very, very inner sound. Okay. So it is little bit seems to look like as a Brahmari something. No, you are not Brahmari. Kind of Brahmari. Okay. अभी आने वाले एक टेक्निक में हम इस टेक्निक को करने वाले हैं जिसमें से हम ऐसे कान को रख के बाई ध्वनि को सुनते हैं. कौन सी टेक्निक है? किसी को याद है क्या? किसी को याद आ रहा है? दाएं कान से ध्वनि को सुनना होता है. छोड़ो, आगे देखेंगे. 32 क्लियर है? Your both orifices will be clean. Yes, Next. Next, what is next? Nad yoga means hearing internal sound in a state of dharana, concentration and dhyan meditation. According to Nad yoga, hearing sense not only catches external sound but also subtle sounds that are created in sound. Anyone who knows the practice, who practice MSRT, mind sound resonance technique, it's my intervention, so I know the technique. So anyone else who know this technique, MSRT? Anyone yogis? No, sir. So in the practice of MSRT, you also do ahata and anahata. Anahata is nothing other than your mental chanting. Okay? And ahata means you hear the words outside the world. I can hear you, you can hear me. But in anahata, your consciousness should be in your supreme level. Then you can hear the sound. Okay? देवता लोग बात नहीं करते हैं, वो लोग अनाहत में ही बात कर लेते हैं. मतलब सटल साउंड, बहुत ही सूक्ष्म रूप से वो बात सुन लेते हैं. In the absence of strong hearing, subtle sounds cannot be heard. But when a person progress in sadhana,
and attains the state of dharana and dhyan, one enters into new depth of consciousness, which I have already said you, depth of consciousness by catching hold of those subtle internal sounds with the awareness. This is one technique of नाद योगा. ठीक है, इसमें हम कॉन्शियसनेस के सुप्रीम लेवल पे चले जाते हैं, तो हम बहुत ही इंटरनल साउंड को भी हम सुन पाते हैं, अवेयरनेस हमारी पहुंच जाती है. मतलब ये सुनने की क्षमता है, एक तरह से समझ सकते हो आप. In the practice of Naad Yoga, first of all, one listen to the physical sounds created inside the body, like the sounds of the breath, sounds of your blood circulation, your heartbeat, etc. While doing any dhyan, you also focus these things. Focus on your breath. Try to listen your heartbeats, your blood circulations. So this is your physical sound. First you do while doing Naad Yoga. While listening to them, a state of consciousness is reached where different sounds start to be heard. What kind of sound you will hear? The sound will be the bell, the sound of conch, sank. You know the sank? Sank, you know? ऐसे करके जाता है जो. Yes, sir. Yes, sir. Conch, flute, waterfall. These subtle sounds keep on changing. So, in Naad Yoga, how will you start? You will listen your inside the body. After that, you will listen these kind of sounds. Okay, this is the technique. So this is the Naad. All these techniques, according to Gherand, you will get by adopting the technique of what? Karnadhauti. Karnarandra Dhoti. We are Karnarandra talking of Karnarandra Dhoti, na? Why we are reading about Naad Yoga? So why we are reading Naad Yoga? Okay, Naad Yoga. Now it's now it times to Kapal Randra Dhoti. What is Kapal Randra Dhoti? आप लोग समझ गए ना मुझे देख के व्हाट इज कपाल रंध्र धोती? ऐसा करके देख लो व्हाट इज कपाल रंध्र धोती. नाउ यू विल रीड 33 34 वर्स नंबर. वृद्धांगुष्ठेन दक्षेण. दक्षिण मीन्स योर राइट हैंड. विच हैंड? दक्षिण. दक्षिण. व्हाट इज दक्षिण? व्हाट इज दक्षिण गाइस? Right hand. Right hand, sir. Right hand will be called दक्षिण. मार्जयेत भालरंध्रकम. एवं अभ्यास योगेन. Which dose? Again, कफ dose. By doing this techniques, you will remove all the disorders which comes from कफ dosa. नाड़ी निर्मलताम. दिव्य दृष्टि, very important. Very important point. Point should be noted for your note. नाड़ी निर्मलताम याति दिव्य दृष्टि प्रजायते. Which techniques give you दिव्य दृष्टि? Not Tratak. This is Kapal Randra, Kapal Randra Dhoti. which is giving as a fruit of Kapal Randra. Divya Drashti is mentioned here. How many times you will do Divya Drashti? How many times you will do Kapal Randra? The cleaning of upper region of the head. You will do Nidraante. Nidra means बस सोने का टाइम हो रहा. हाँ, तो उठने के टाइम पे, निद्रा की समाप्ति पर, निद्रांते मतलब उठने के टाइम पर. हाँ, सॉरी, निद्रांते. हाँ, निद्रांते, सॉरी, थैंक यू. निद्रांते मीन्स निद्रा का अंत कब होता है? मॉर्निंग में इन द मॉर्निंग. भोजनांते, खाने के बाद. सो विच खाना? रात का खाना, दिन का खाना? डिनर. भोजनांते. भोजनांते मीन्स आफ्टरनून. ओके, इट्स मॉर्निंग. अरे सीक्वेंस वाइज चलेंगे आगे. हाँ, दिस इज मॉर्निंग, सो दिस इज आफ्टरनून. दिवांते. दिवांते इज मीन्स शाम का टाइम. दिन की समाप्ति पर. शाम. हाँ, शाम का टाइम.
So this is here, massage the forehead with right hand thumb. With this type of practice, one is relieved kapha dosa, the nadis are purified, and divine vision is attained. What vision? Divine vision, which is called divya drashti. Divya drashti. How you will read divya drashti? This is divya drashti. Sir, how to do it? Show once. ऐसे हम लोग तो there are several practice of कपाल रंध्रा, but I know this technique. भी मैं इसको यहाँ पे लिखा है, ऐसा मैं दिखा रहा हूँ. First technique says थपकी देना, जानता है थपकी देना? Another very beneficial technique of Kapal Randhra employs the cooling quality of water. Joining the fingers and thumb of the right hand, fingers and thumb of the right hand, like this. How? Like this. Make a cup-like shape with the palm. Take water in the palm. Lean forward and pat. Pat means thapki, you know. What is pat? Pat the upper portion of the head with the palm 3 or 4 times. How many times? 3 or 4 times. So that the Brahmarandhra becomes wet. Repeat this process 4 or 5 times. So this is the techniques we all know now. Frequency and time also mentioned here. Please do read. It will give more explanation when you read with your own mind. Okay. Should be, और हमारे पास समय है ना अभी थोड़ा सा? हम लोगों ने एक भी क्लास नहीं किया, हम लोग 10 मिनट और पढ़ सकते हैं सर. ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें आपको याद करना पड़े अभी तक. बहुत जी सिंपल सर. टेक्निक. we should move on. चलो हृदय देख लेते हैं लगे दांत. आप लोग बताओ व्हाट यू वांट. मैं तो 10 बजे तक पढ़ा दूंगा गाइस, मेरे पास बहुत एनर्जी है. जब मैं पढ़ने बैठता था ना तो मैं बुक खत्म करता था. ये बुक उठा ली है. व्हाट इज इट? दिस इज घेरंड संहिता. ये उठ गई है तो ये खत्म होगी. ये ऐसे खत्म होगी. ऐसे JRF नहीं मिल जाते भाई. You will not get JRF easily. Don't say net if you want JRF. If you want JRF, then only say JRF. There is nothing like net. It was my perspective. It's not necessary to make like same as me. Okay? Always say JRF if you want JRF. If you are able, if you have age, get JRF. So उन लोगों के लिए जिनको JRF चाहिए. Because without having JRF, it's very tough to survive in PhD journey, guys. क्रोध, ईर्ष्या आपको खा लेते हैं. When your colleague will get JRF and you will get only 8,000 rupees only. What I am doing here? It's all about my experience. I am not saying anything. कि मेरे जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं, और मैंने ये साफ कहा था, without your JRF, don't do PhD. ठीक है? ये मेरा मानना था, बट ऐसा आप लोग भी माने जरूरी नहीं है. क्योंकि अगर आप लोग का माहौल अच्छा है, यूनिवर्सिटी के साथ टर्म्स अच्छे हैं, देन कीप मूविंग. बट अगर आप सच में करने वाले हैं तो मैं तो यही सलाह देता हूँ कि बिगिनर हैं तो प्लीज गो फॉर JRF देन PhD. ये मेरे सर हैं संतोष मिश्रा सर. इन्होंने मुझे इंग्लिश पढ़ाई थी. ग्रामर पढ़ाई थी. मैं हिंदी मीडियम से हूँ. इन्होंने मुझे, आज मैं भी जो भी मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ ना योगेश, मैं इनकी वजह से ही बोल पाता हूँ. दे मेड माई ग्रामर सो स्ट्रॉन्ग. स्टिल इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, बट आई कैन टॉक विद यू इन इंग्लिश. इनकी वजह से. संतोष मिश्रा सर नाम है इनका. माई रिस्पेक्टेड संतोष मिश्रा सर. नाउ वर्स नंबर 35. व्हाट वर्स नंबर 35 सेज? हृदय होती त्रिविधाम. हाउ मेनी टाइप्स? 3 types. कुरियात की जाती है. हृदय धोती त्रिविधियों से कुरियात की जाती है. मतलब there are 3 types of हृदय धोती who's done by दंड
What is dand? Dand is nothing other than your stick. What is vaman? Regurgitation. Regurgitation. Okay. Vasasa, by cloth. Dand means stick, vaman means regurgitation, vas means vastra. So there are three types of hriday dhoti here. First one is stick, regurgitation, and using cloth. Next, what? First one is dand. Dand, vaman, vastra. Na? So we will cover first dand, then vaman, then vastra. Please remember the sequence. UGC will ask, tell me the sequence of hriday dhoti. So you have to give answer. Dand, vaman, vasan. Dand, vaman, vasan. Vas means also got vasan. Dand, what is dand? There are three types of dand here. First one is rambha dandam. Second one is harit dandam. Third one is vetra dandam. Rambha dandam, harit dandam, vetra dandam. Dandam hi dandam, guys. Tathaivacha. What is rambha? Rambha is your banana. Okay. Harit dandam. Harit dandam means turmeric. Vetra dandam means sugarcane. The soft stem portion of banana tree, a thin turmeric, or a sugarcane stem. UGC can ask any one of them. Okay. हृदय मध्य, हन मध्य नहीं, हृदय मध्य. हिन मध्य मतलब here. What is called हृन मध्य. हृन मतलब क्या हो मालूम? हृदय. अप टू योर स्टमक, ये वाला पार्ट होता है ना क्लीन, इसलिए हम इसको हृदय मध्य बोलते हैं. इसी रीजन में हमारा हृदय होता है. समझ में आ रहा है हृदय मध्य क्यों कह रहे हैं? हम इसको हृदय मध्य क्यों कह रहे हैं? पानी नीचे है, लेता है ना उसमें? नहीं, नीचे मैंने पानी रखा ले लो. हृदय मध्य चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहारेत् शनैः कफम पित्तम चाक्लेदम रेचयेत ऊर्ध्व वर्तमना दंड धौति विधानेन हृदय रोगम नाशयेत ध्रुवम. I will break the words. I will break the words for you. You will give answer. Okay. रंभा दंडम, हरित दंडम, वेत्र दंडम तथैव च. केले के पत्ते का डंठल, हल्दी के पत्ते का डंठल और गन्ने के पत्ते का डंठल. तो आप तीनों जान चुके हैं. इन तीनों का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस विधि में. ठीक है. Should be repeatedly inserted through the mouth and then slowly withdrawn from the middle of your chest. Then cough, pith and mucus should be evacuated through the mouth. This practice definitely destroys even heart disease. This practice even destroys heart disease. भाई नाम ही हृदय धोती है तो हृदय रोग तो जाएगा ही ना. कफ पित्त और क्लेद तीनों जा रहे हैं इसमें. कफ पित्त एंड क्लेद. कफ पित्त एंड क्लेद क्या कहलाते हैं इसमें? कफ पित्त एंड म्यूकस. ओके. इसमें और किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर. इसमें कोई डाउट नहीं. दंड कंप्लीट. दंड कैसे करते हैं आप लोगों को मालूम है? आप लोगों ने कभी दंड धोती की है ना? यस सर. बस वही दंड धोती है. बस ये था कि घेरंड ऋषि जो हैं उन्होंने, उनके पास कोई रबर नहीं था कि वो इंसर्ट कर रहे थे. उनके पास तीन ऑप्शन थे. या तो केले का मृदु भाग, केले के तने का मृदु भाग, या तो हल्दी के डंठल का मृदु भाग, या फिर गन्ने के का मृदु भाग. मैं तो सोचकर मेरा जी घबराता है. बट एज यू कैन सी ऑन योर सर्कस, so many people insert all the swords in their mouth up to your stomach. How they do this? Have you ever
seen this technique in circus? Yes, sir. Sir, Yes, sir. not in So circus, this, but in my university, my sir used to do that. so this is the technique. Vastra dhamti. Yes. So don't be surprised. This is very simple technique. Once you will get the secret technique of this, secret माइनर माइनर बोल सकते हो उसको, जो जो होती छोटी छोटी चीजें, बारीकियां, उनको आप जान जाते हैं तो आप बड़ी से बड़ी टेक्निक्स कर सकते हैं. इस टेक्निक में श्वास को रोकना होता है while retaining the breath inside. Where? Inside. The rod is inserted as deeply as possible and slowly rotated. Slowly rotated also. This may induce the desire to vomit, but do not do so. Instead, the stem is removed and the mucus and other waste matter are spat out. In order to do this practice, breath retention must first be perfected. What should be perfected? Breath Kumbhak. retention means kumbhak. As long as one is breathing in and out, this practice cannot be done, guys, because the throat and windpipe will be moving, and when it will be moving, how will you perform this technique? So you have to get perfection in breathing retention. The rod is inserted only while retaining the breath. Okay, is it not so simple as we are reading this technique in so easily? Don't do this technique. आप जाओ, कोशिश करने लग जाओ, और कल कल को आपकी न्यूज आए रेस्ट इन पीस, डैश 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 करना पड़ेगा. ऐसा मत करना, ठीक है? प्रिकॉशंस प्रिकॉशंस लिखे हैं आप लोग, पढ़ना इसका. पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल गाइड. मच सेफर फॉर्म ऑफ हृदय धोती इज वमन धोती. वेरी सेफ वमन धोती. मैं कभी भी कर सकता हूँ वमन धोती, हाँ, कभी भी. इवन 2 glass of water I can do वमन धोती. Anyone do the same? Good. Benefits. The inner walls of food pipe are covered with cough, pith, and mucus. When this matter accumulates, it can enter the larynx and affect the respiratory system. So, this dhoti cleans the respiratory system, reduce the breathing capacity, and producing a wheezing sound while inhaling. तो इन सारी चीजों को दूर करता है. With दंड धोती, cough, pith, and clay mucus are expelled with रेचक क्रिया exhalation. Now Vaman. What is Vaman? Dand has completed. Now Vaman. Now it's Vaman. Bhojanante. What is Bhojanante? भोजन के बाद, खाना खाने के बाद. After meal. So there are 2 types of Vaman. First one is Vyagra. Vyagra. What is Vyagra? Singh. You know, lion. Tiger, tiger. 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 Vyagra means tiger. Okay. So this technique हर जानवर करते हैं. Every animal do this technique for their cleaning. मेरा मैक्स भी करता है. Even my dog also do the same techniques. When he eat लफर सफर, जब वो खा लेता है ना, तो he do the same techniques. While eating, चारा खाता है वो, ग्रास. वो चारा खाता है, और चारा खाने के बाद वो चारा, you know, चारा grass. He eat grass and then vomit. So Vyagra Kriya, all the animals do Vyagra Kriya. But Rishi Gherand has mentioned especially Vyagra Kriya. Bhojanante means, it is clearly mentioned here. There is one type of woman mentioned is here. That is not Kunjal. This is Vyagra. What it is? This is not woman. This is Vyagra. Vyagra. Every time Vyagra will be performed by Bhojanante. Having your meal, then perform this technique after 3 hours. So it is Vaman Dhodsi, it is which is mentioned in verse number 38 and 39. कुंजल क्रिया भी वमन है, लेकिन वो यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं मेंशन है. Is it clear now? What is authentic, what is not? It's not about commentary, it's about authentication.
Bhojanante pibet vari. Bhojanante. So by commentary, you can assume after having meal and after 3 hours, pibet vari cha kantham. कब तक? Kant means your throat. After 3 hours, you will drink water, वही 2 glass of water again and again, up to your throat. Puritam sudhi, urdhva drishtim. Urdhva means urdhva, ऊपर देखना. ऊपर की ओर देखना. ऊपर, looking upwards for a moment. Chhadam means for a moment. Tat jalam vamiyet puma. First, look upwards for a moment like this, then ऐसे होके, वही क्या नाम है उसका, आपने मूवी देखी है ना, कौन सी, इसमें अमिताभ बच्चन करता है यार, वो मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है, सिंह रघुवंशम ऐसे करके कुछ नाम है, किसी को याद आ रही है? अरे बहुत आती है सोनी मैक्स पे मूवी यार, सूर्यवंशम. सूर्यवंशम. सूर्यवंशम में जैसे वो खीर खा के नहीं करते हैं, बस वैसे ही. हाँ, water up to the throat and after looking upwards for a moment, expel the water like Suryavansham and vomit. Cough and pitta disorders are removed. This is very simple techniques. What should we remember? नित्यम अभ्यास जो है ना, कफ पित्तम निवारयेत. भोजनांते, you can ask भोजनांते या फिर कैसे करना है, आपको टेक्निक पता होनी चाहिए. लास्ट बट नॉट लीस्ट, देखो यहाँ पे फर्स्ट वन कुंजल क्रिया, मैं कमेंट्री में आता हूँ बाद में, अभी मेरे को श्लोक कंप्लीट करने दो. कुंजल क्रिया एंड देन सेकंड वन इज व्याघ्र क्रिया. बोथ आर डिफरेंट, हाँ, both are different, but Gherand aims in this verse to explain that indigestible food should be expelled. Okay, last but not least, Vastra Dhoti, verse number 1441. What it is? Chaturangulam. 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 What is Chaturangulam? Charangulam. 4 angulam. 4 finger wide. A roll of fine cotton cloth 4 fingers wide should be gradually swallowed. Chaturangulam vistaram sukshma vastram. Sukshma means what is sukshma? A fine cotton. Yes. यहाँ पे सूक्ष्म means a fine cotton should be gradually swallowed and then taken out slowly. पुनः प्रत्याहारेत प्रोच्यत धौति कर्मकम. प्रत्याहारेत means expel it out. It is also called प्रत्याहारेत. प्रोच्यते धौति कर्मकम. इस धौति कर्म को इस तरह जाना जाता है. गुल्म. So what is gulm? Anyone knows what is gulm? Gulm. Every time you will see this word. What is gulm? So disease है कोई. No one knows. So let me clear. The word gulm means a bunch or spherical substances that look like a lump. Everyone knows lump. लंपी डिजीज आपने देखा होगा. लंपी डिजीज में भी वही होता है, गाय लोगों के साथ लंप निकल आता है. When this lump is formed inside our stomach, it is called Gulm disease. So what you get when a lump formed inside our stomach, it is called Gulm. In modern language, it is also called a kind of tumor. Everyone knows tumor. गांठ पड़ जाना है kind of. Kind of गांठ पड़ जाना. गांठ means also lump or tumor. Okay. So why it happens? It happens because vayu in our body is the main cause of Gulm disease. What vayu? Apan vayu or any kind of vayu. That is when the aggravated vayu gathers bile and phlegm
along with it at one place and forms a ball, a lump. It is called Gulm disease. Okay? वायु गैदर होते हैं एक जगह पे बाइल में और एक गुच्छे जैसा बन जाते हैं, तो इट्स कॉल्ड गुल्म डिजीज. ठीक है? सो वस्त्रधौती कैन remove your Gulm disease. Now jar. What is jar? It's your fever disease. Paracetamol. Everyone knows paracetamol. Pliha. Enlarged spleen. What is spleen? Anatomy पढ़ी है आप लोगों ने? Which help in the Samsan. digestion of cellulose. हाँ, spleen. So when your spleen become large, so it's called pliha disease. So what is Kusht rog? Kusht. Skin Kusht. rog. Skin disease. Okay. Cough and pith. You know what is cough and pith. Vinasyati. Who vinasyati? Who is Vastradauti. 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 Yes, Vastradauti. और क्या करता है वस्त्रधौती? वस्त्रधौती gives you आरोग्यम. What is आरोग्यम? आरोग्यम. Disease free body. Disease free body. Bal pustish. Bal and pusti, both words. Stamina building. Bal. Increase the He gives you strength. He gives you pusti. Strength. Pusti is also called cheerfulness and promotes healthy growth, gives stamina. It keeps the body free of disease. Okay. So this is the fruits of this technique, वस्त्रधौती. फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, चतुरंगुल बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये हो गया. इट्स ऑल अबाउट टुडे. ऐसे की जाती है वस्त्रधौती. बहुत लोगों ने की भी होगी. किसी के पास कोई सजेशन हो वस्त्रधौती को लेकर, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव योर सीक्रेट हाउ यू डू वस्त्रधौती व्हेन यू डू दिस सटकर्मा. सर मेरा तो सिर्फ थ्रोट के थोड़ा सा नीचे ही जाता है, उसके बाद ही सारा बाहर निकालना पड़ जाता है. लाइक हो नहीं पाता इतने अच्छे से परफेक्टली. पर दंड आई कैन डू, दंड एंड वमन, but not Vast right now. Anyone else who want to give the suggestion for those who want to do this technique? Anyone? Okay guys, चलो. No suggestion. शहद लगा लिया करो इस पे. हाँ. और and you can use honey, or in my opinion you can use honey or रसगुल्ला जिस पे होता है ना मीठा सा, ऐसा कुछ जिससे कि जल्दी जल्दी अंदर जाए. ठीक है, ये मेरी तरफ से था. और किसी के पास कोई टेक्निक हो तो वो भी बता देना. ये टेक्निक है, इसको आप लोग अपने से पढ़िएगा. ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे. मूल शोधन के बाद हम कल देखेंगे. आज का हो गया, इतना ही था. एनी डाउट? नो डाउट. No sir. या तो आपको समझ में ही नहीं आया इसलिए कोई डाउट नहीं है, या फिर सब समझ में आ गया इसलिए डाउट नहीं है. Sir, क्या once reason we है? will our own go through the whole book and then we will ask the question. Okay. So once we go through the book comparing the lecture, then we can get something questions. Because at this time we are getting everything, but revision is very much important, as you said before. Revision. It's preparing again. Revision means preparing ourselves before the class for this coming class, like that. Okay. Recap. Actually today. Okay. I can understand now. Go read your book, watch lecture. If you have any doubts, I am here. You can ask anytime. Okay.
Thanks. Thank you, guys.